Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, a show that addresses all your stock related queries. So in case you're here for the first time, the WhatsApp number is flashing on your screens. This is where you can ask all your stock related queries and our top market experts will give you a custom made advice. In case you're watching us live on our YouTube platform, well, you can send in your questions there as well on the comment section and I'll be happy to take some of those questions and address it to our top market experts too. Let me now just quickly welcome our guest on the show today. We have a very interesting guest joining in. Mr. Akshay Bhagwat joins in on the platform with us, and especially at a time when the markets are finally showing us some signs of reversal. He's the Senior Vice President of Derivatives Research at JM Financial. Warm welcome to you, Akshay. Good to have you with us. Finally, 23,000 is back after a month. What is it that is standing out for you in the markets? Do you believe this rally will sustain? Good afternoon, Sakshi. So, yes, absolutely. March month has been more of a respite rally, the much sought and awaited recovery rally, which everyone was looking forward to. And even if you were to look at the data points here, there has been some buying intent from the FIIs in the index future segment in the last 4 to 5 trading session that has provided a much awaited short covering rally, as you may call it. As the market is currently placed, we are at a very crucial juncture of the technical trend line resistance, which falls at 23,100. It's a litmus test for the market from here on, whether it manages to sustain and surpass these levels or not. So the next 2 3 days will be crucial as to how 23,100 plays out. But overall, broadly looking at the setup, the recovery rally, the probability looks high that 23,500 to 23,700 should be in the making in the month of April. Okay, fair point. So that's the view on the markets. Akshay, we'll start taking some queries that are coming in for you and keep coming back to the markets and your own choices in the markets too. First up, we have a question from Avnish Chaudhary, and he says that, मैम कुछ दिनों पहले बिरला ग्रुप के ने अनाउंस किया था कि वो केबल्स और वायर सेगमेंट में आ रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के थ्रू, और उसके बाद इस पूरे सेगमेंट में एक वीकनेस थी और अब उसके बाद अदानी ग्रुप ने भी इसमें एंट्री का ऐलान किया है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स जो वीकनेस में चल रहे हैं, हैवेल्स के या इंडस्ट्रीज पॉलीकैप, इनमें अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपका सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज इसी के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि के ई आई इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक्स आज 15% तक क्रैश होते हुए नजर आए, इनफैक्ट अपने 15 मंथ लो पर हैं। ऐसे ही हैवेल्स, पॉलीकैब, इन सब में भी नीजक रिएक्शन दिखा है। कुछ दिनों के लिए हमने एक अल्ट्राटेक सीमेंट के फोरे के बाद भी लगातार प्रेशर देखा था स्पेस में, धीरे से रिकवरी आ ही रही थी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट ने एक बार फिर से मूड नेगेटिव किया है। अक्षय, आप कैसे देखते हैं इस पूरे केबल्स एंड वायर सेगमेंट को, और जो चेंजेस हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए निवेशकों को? जी तो बिल्कुल आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि दिग्गज बिरला और जो अडानी है वो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट है आज दिखने को मिल रहा है, जो काफ़ी स्टॉक्स जो पियर ग्रुप है सेगमेंट में, उनमें काफ़ी बिकवाली का प्रेशर है। तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, क्योंकि इम्पैक्ट काफ़ी सेंटिमेंटली ये सेक्टर को, जो इसके पियर्स है उसको टेम्परेरी डेंट तो मारेगा ही, पर अगर आपको इनमें स्टॉक्स चुनना है जिसका टेक्निकल सेटअप जो है आपको बाय ऑन डिप्स वाला सिनारियो दे, तो टेक्निकली हैवेल्स जो है इसका ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। इसमें काफ़ी हमने 1400 के स्तर से रिकवरी भी देखी, काफ़ी मेजर वॉल्यूम्स भी देखे, और टेक्निकली कहीं ना कहीं 1400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इनमें आपको अगर स्टॉक्स चुनना है, जो मैं बाय ऑन डिप वाली रणनीति बनाऊंगा, तो हैवेल्स का सबसे बढ़िया सेटअप रहेगा। 1400 का सपोर्ट जोन है, थोड़ा बाय एंड होल्ड वाला आपको जो है एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। पर कुल मिला के 1575 और 1650 ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के आप टारगेट जोन्स हैवेल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट दैट। चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं अवनीश आपको राय मिल गई है, उस तरीके से आप आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अंकुर मोदी का सवाल है, जो लिखते हैं, हाय साक्षी, वी आर फाइनली सीइंग सम रिलीफ इन मार्केट्स एंड होप इट विल कंटिन्यू। यस, फिंगर्स क्रॉस्ड देयर मिस्टर मोदी। एंड ही सेज दैट, you know, summer season is coming up. I want to know whether Parag Milk or Vadilal could be good choices for the summer theme as stocks. I have a 2-year horizon. Should I be looking at these two stocks? Akshay, any summer related theme stocks that you also have on your radar, you could also add on to the list.
I think Vadilal, one of the names you mentioned, that can be considered if you are more keen on a theme-based move in the market from a 2 to 3 month perspective. So here, Vadilal is one case where, irrespective of what is happening in the market, the stock has moved one way up in the last 3 weeks, 3,600 to 5,200. So yes, slightly buy on dips will favor your risk reward. 5,000, 5,050 is a good entry level, and 5,800 is a targets you can look forward to in this stock. Voltas, they are into the air conditioning business majorly. So here, Voltas can be the another stock you can look forward to. Here, week on week, the rally has kind of moved from 1,200 to 1,475. Again, 1,400, 1,425. Slightly a dip would offer a better risk reward for potential targets till 1,650. So Voltas and Vadilal, these are the two names you can look forward to in from the summer theme based which you look forward to. Okay, fair point. Let's also look at some of the other questions then. We have this question from Satya. It says, Good afternoon, Sakshi. Could you please let me know the key levels to add a fresh stocks on NCC and GE shipping? I do have a long term view. NCC, of course, we have been seeing some buoyancy off late, and the second one is GE shipping as well. We have also seen some bounce on the shipbuilder related stocks off late too. So, those momentum plays at this point in time, do you find value to add at the current levels, Akshay? Uh, well, uh, See, if you look at NCC, it's bounced from its 200-day weekly moving average support. So that's one of the most looked forward, a technical parameter. So 170, 175 is roughly that level. See, technically, it's in the support in the making. So you might again get a re-entry around 190. So if you are searching for or you have a level-based approach, 190 should be a good entry point from a long-term perspective here in NCC. That's the buying point you could look forward to. And as far as GE shipping goes, similar kind of recovery from its 200-day moving average on the weekly price chart. 800 is that support zone. So we are at 943 right now. So from an entry perspective, any level around 915, 920 should be a good entry point to average it out. So both the stocks look good. From a long-term perspective, yes, it's not going to be a V-shaped recovery, but level-wise, I have given you the good levels to enter. These are good levels to buy and hold from a long-term perspective. Okay, got that. Let's take the next one. We have a caller with us now. Momita is joining in from Kolkata on the phone line. Hi, Momita. How are you? Hi, Sakshi. I'm doing good. Hope you are well. Very well. Thank you so much for asking, Momita. Go on with your question, please. Uh, I just, I wanted to check. The market has been doing well since yesterday, and even today it looks good. So, is does this mean that we are out of the low momentum that we had, and are we now moving upwards? And if that's the case, then I just wanted to know maybe two, three sort of trading bets that I can take for about a month's time. Okay, got that. Akshay, for you, finally, are we out of the woods? Does it mean that we are now on an upward trajectory sustainably? And would you be able to suggest any key stock ideas? To answer your first question, whether we are reversing, we are in upward trajectory. So really, this is the first month which comes after almost 6 months of selling. So this is more of a technical bounce back. Now, really to conclude whether this momentum stays or not, you really have to dig deep into the numbers. Here, the FII participation will hold the key to the next couple of months. April month is normally the month where you have the quarterly result numbers coming in. So expect more of a range bound to subdued move for the index. So somewhere I feel looking at the momentum which is back in the market, it's more of a trading move where you can anticipate further 500 to 700 points on the Nifty index as an upside possible target for the month of April. So from that perspective, if you're looking at stock specific action, Tata Motors is one name you can look forward to. 685 is where it currently trades after almost 6 7 months of a fall. 600 support has worked well. I'm looking forward for targets till around 740 to 750. So with these targets in mind, you can consider buying Tata Motors. Add on dips around 650. Stop loss around 610 is the trade which works out.
And Federal Bank is another stock which you can look forward from the banking pack. Last 3 months of downtrend, recovery strong at 180, potential targets till 200, 205 in the making. So this is the another trade you can look forward to for with a time horizon of 1.5 month holding. Stop loss 177, target 205 is the trade setup for Federal Bank. Okay, I hope here you have got the choices where you could probably explore some opportunities. Let's go on to the next question. We have this question from, okay, some interesting questions and some of them doubling as well. So let me combine a few questions. Okay, so Samvit Nageshwar says, I want to invest in the defense stocks. It's been in momentum for the last few days. Vinita Gupta also says, I want to invest in stocks like Bharat Forge and DCX Systems. So we'll combine it both. Overall view on the defense space for you, Akshay. How are you looking at the recent momentum that the stocks have been in and your top choices? Well, defense pack has been the most spoken about pack because the expectations were built high in the budget, in the prior budget as well, and unfortunately, it's been it has left more of a sour taste in most of the investors' trading portfolios, you can say. Well, the only stock which I feel has a good potential to rally from here from an investment perspective, purely on based of chart reading, is BEL, Bharat Electronics. 294 is the current market price. This stock has not taken that much of a hit as its peers have. Recovery has been pretty strong. So here I'm looking forward for targets of around 350 to 375 from an investment perspective. So BEL is the name you should look forward to. Okay, fair point. I hope Samvit and Vinita, you've both got an idea as to where exactly should you be looking at for the defense stocks. Next, we have this question from Peter Raj. He's from Trichy. He says, I have Birla Soft in my portfolio, bought this stock at 620. I want to average at the current levels. I'm a long-term investor. Should I go ahead and do that right away? IT stocks, again, there is a lot of volatility that we've been looking at off late. There are, the street is divided on the opinion there. One pack says that IT is in for some more pain point throughout the course of FY26 as well. There is uncertainty on the global economy, growth, etc., whether the earnings will recover or not. And second of all, again, we believe that they have corrected from highs as well. So those are looking at an attractive valuations as well. Where exactly would you put Birla Soft in when we ask you on this mid cap IT stock, Akshay? Yeah. So Birlasoft, as I understand, this stock has been in a downtrend based on the price chart reading. The broader downtrend is intact. It is just that the stock is heavily oversold on the technical parameters. Currently, it lies at a trendline support where the probability of a bounce back. Now, I'm looking at monthly charts, so it's more of a positional view which I'm sharing. The recovery chances are higher from the current zone. The entire leg of downtrend, one rally of downtrend is done. So the recovery rally can at the best as of now target around 500. So I believe you are stuck up at higher levels. Averaging does make a lot of sense at the current levels. Recovery rally till 500 is where I'm looking forward to right now in the current leg of reversal. So right now work with targets of 500. Yes, you can average and we need to take a review at 500. Ideally, looking at the current market structure, I would like to take an exit in this stock once it tests the levels of 500, which it should do within 3 to 5 months of time frame. Okay, let's take the next question. We have a caller with us. गौरव तनवर हैदराबाद से हैं हमारे साथ. नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? जी गौरव पूछिए अपना सवाल. ठीक है, अभी आपको बता देते हैं. सही समय पर आप सवाल पूछ रहे हैं. अगेन अभी हम डिफेंस स्टॉक्स की बात कर ही रहे थे. गौरव ने 5400 5500 के लेवल्स पर HAL खरीदा हुआ है, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे से जो गिरावट आ रही है इसको वो पेशेंटली होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने. अब ये जानना चाहते हैं जब वापस थोड़ा सा मोमेंटम आया है और स्टॉक बाउंस बैक किया है 33-3400 के लेवल से, क्या आप इसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या इस लेवल पर एवरेज करना चाहिए? 2 साल का व्यू है इनका.
जी देखिए, डिफेंस पैक ने अच्छी खासी रिकवरी करी है कल। और प्राइमरली अगर HAL की बात करें तो कल शायद न्यूज़ भी बेस्ड था इसमें, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी है। तो फिलहाल टेक्निकली अगर मैं प्राइस चार्ट को स्टडी करूं तो ये जो रिकवरी रैली 3100 के स्तर से जो हमें देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं 4000 के आसपास जाके एक बार टेम्परेरी उसमें रुकावट आ सकती है। तो 4000 ये पहला पड़ाव है HAL के लिए। आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको बने रहना है स्टॉक में। तो 4000 ये पहला पड़ाव रहेगा। टेक्निकली वहां एक रिव्यू लेना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप एक 4500 से 4600 ये एक टारगेट से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके, गॉट दैट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम। गौरव, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो एक एक करके वो भी लेते हैं। पहला हम लेते हैं स्वाति का सवाल। ये जलंधर से हैं और हुडको के बारे में पूछना चाह रही हैं या फिर PTC इंडिया। दोनों स्टॉक्स इनके पास हैं। 210 पर हुडको को रखा हुआ है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में और PTC इंडिया 165 के भाव पर। अब पूछ रहे हैं होल्ड करके रखें या सेल कर दें, और लेवल्स भी प्लीज आप इनको क्लियर कर दीजिए कि किस लेवल पर क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए। हुडको अभी 199 पर है, यानी कि इनकी खरीद से नीचे आ चुका है। 210 की खरीद थी। PTC इंडिया 165 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। दोनों पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? PTC फिलहाल 157 पे आ गया है। आप हुडको की बात करें तो ये वापस मिड एंड स्मॉल कैप में रिलीफ रैली के चलते आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो टेक्निकली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। एक पुलबैक रैली है जो टेक्निकल टर्म्स में ओवरसोल्ड जोन से बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 205 से 210 ये फिलहाल शॉर्ट टर्म के अपसाइड टारगेट्स है। तो अगर आप इसमें हायर लेवल्स पे फंस चुके हो तो सलाह रहेगी कि 210 पे एक बार आप एग्जिट ले ले स्टॉक में, क्योंकि वहां पे एक भारी रेजिस्टेंस जोन है। PTC इंडिया की बात करें तो PTC इंडिया टेक्निकली अभी भी नेगेटिव है। हालांकि एक छोटा सा सपोर्ट जोन 140 में बिल्कुल बना है और ये रिकवर 170 तक कर सकता है। तो 170 ये एक बाउंस बैक में एग्जिट करिए आप PTC इंडिया। तो दोनों में आपको एग्जिट बनाना है, पर एक हायर लेवल्स पे जिनको मैंने मेंशन करा है वहां पे आपको एग्जिट करना है। ओके, गॉट दैट। तो चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। नेक्स्ट हम सवाल ले लेते हैं। हमारे पास ये सवाल आया है मिस्टर कृष्णार्जुन राव का, और ये उड़ीसा से हैं, बहरामपुर से। स्वागत है आपका कृष्णार्जुन राव जी। सवाल है इनका इंडियन होटल्स पर। 50 शेयर्स हैं इनके पास 680 के लेवल्स पर। He says he's sitting on profits. Good to hear that. Many stocks and investors are actually sitting on losses, but you still are holding on to profits, and that's a good thing. He wants to know at what levels should he be booking out his profit on Indian hotels. So Indian Hotels on the technical price chart is one stock which has a very healthy technical price structure. And the recent recovery which we have seen on the weekly charts exactly coincides on the trend line support, which works around 700 levels. So rest assured, this stock is moving for the swing high levels of 880 to 900. These were the levels which were tested in somewhere in June 2025. That's a couple of months back, and that should be the first target you should be working with. So 888 to 900, when it reaches there, take half the profits off the table. Remainder you can keep it, considering the strong price structure of this stock. Since you are a long term investor, the potential upside targets from a long term perspective can be around 975 to 1000. So half booking at 880 to 900, and the remainder target area around 975 is the strategy I recommend. Okay, fair point. Good to know that. Let's look at the next question then. We have some questions coming in on our YouTube as well. So we'll take some questions there. Yes, we have a question from one of our viewers says, hi, I have Adani Total Gas and my purchase level is 751. I want to average this stock. What would you advise? If you look at the price structure, this stock is at its support zone. Weekly price structure is showing uh, a
Possible bounce back scenario always around the levels of 530 to 550 zones. Historically, this pattern is has a very strong tendency of a bounce back from the support zone I mentioned. 800 can be the potential target areas you can work with. So yes, if you're open to averaging, you can average, but have a strict stop loss. This is more of a technical based bounce back scenario. So 500 is your stop loss and 800 is your target with a time horizon of around 6 to 8 months. Okay, I hope this has given you a lot of clarity as to how to go about your own position here. Let's take the next one. This is from Vani from Vizag. She wants to know, is it a good time to enter KPIT Tech? Could you please give me an analysis for long term? Akshay, KPIT Tech, very, one of the favorites on the erstwhile pack. This has been an erstwhile wealth creator for investors. It's shown a lot of promise to investors in the past. But after the consolidation, there has been a lot of talk about whether valuations sustain, whether there are enough opportunities to continue the momentum on the higher side. What exactly would you say? Last 6 months, 24% of a dip has already been seen on this one. Yeah, I think technology space is one pain point right now in the market. So not expecting a V-shaped recovery or an instant recovery kind of a scenario in this stock. Since you are more long term, I think the price structure is not yet damaged. The longer term structure still is promising. 1100 somewhere is a consensus moving average support which is building up on the weekly charts. So the suggestion is hold on. I think it may take some more time to recover, but eventually this stock still is on the radar on long-term charts, positive. No instant recovery though, but hold is the recommendation. Okay. Hopefully that has also given you some clarity. Next, we have this question from Vinita, and she says, I have two stocks, Genus Power at 380 and Skipper at 540. I want to know what should be the strategy on both these stocks going forward. What would you advise? So Genius Power, it has seen a fair bit of correction, 460 to 260, almost halved from its all-time high levels. And now somewhere the moving average support works till around 220. So I think the downside is capped if you are looking from an investment perspective. Yes, you can be invested. Do not expect instant recovery. Buy and hold. Be open to averaging around 220 in case that dip offers you. But from a longer term perspective, be invested. The recovery rally going forward should see the stock back again above 300. And can you please repeat the second stock? I missed the name. The other one is Skipper Limited. She bought at 540 levels. Skipper Limited, I think here there is a good potential for a recovery. 380, 400 support has been cemented. Now it's about momentum regaining back in this counter. So I believe you should get your levels of 540 within this year within 1 year time frame from the current levels, where you should ideally look for an exit. Okay, fair point. I hope this has helped you out. Next, we have this question coming in from Mr. Dasaradhi. He says, is it the right time to enter L&T Finance at the current levels for 6 months view? A good question there. NBFC space is also coming back in flavor yet again. How do you find L&T Finance there? If I were to look at L&T Finance, I think overall this stock is in a range-bound price structure in this entire recovery rally, which we have seen in the financial services space. Primarily, it's been led by Bajaj Finance and Shriram Transport Finance. So LIC Finance is more of a sideways consolidative pattern where you won't lose much, but it won't either make significant gains for you. It will stay in this range broadly between 130 to 175 with a horizon of a year. The suggestion is better to move to Shriram Transport Finance or Bajaj Finance, where the potential in the financial services space is significant on based of the price reading. Okay. Um, let's take another one then. Let's go back to our WhatsApp questions. Next one is from Mohit from Ludhiana. He says,
I have 2000 shares of Trident at 3 rupees 90 paisa. Time horizon is 2 years. Please guide. It's an absolute penny stock that you had invested in, and the stock has jumped up to 25 odd levels. So you have actually got the better part of the profits right there. And very rarely do penny stocks really give you that opportunity to continue to book profits or get profits at higher levels. Akshay, would you be able to advise on this one? Will it continue with its, momentum rally that it has shown thus far, or should one really book out and get into some large caps now? Well, from the current price level where this stock trades, Trident Limited, the probability for bounce back is very high. Now, one of the reasons is market has stabilized, your small and mid cap is gaining traction. And if you were to look at this price structure of Trident exactly on 31st of March 2023, from the levels of 24, 25, it did recover all the way till 50. So it was a doubler then. So in all probabilities, the support of 25 should see demand again. Recovery rally should see the stock sailing past 30 odd levels. But since your entry point is pretty decent at around 8 or 9 levels, as you mentioned, I think it makes a lot of sense to move out slowly from this stock. Around 30, 32 is where I would advise to book out profits in Trident Limited. Okay, got that. Let's take another question again from our WhatsApp. We have this question from Avnish Aryan from Muzaffarpur, Bihar. He says, hello ma'am, इरिडा में 2 दिन से अच्छी न्यूज़ की वजह से एक रिवर्सल आया है और 151 के ऊपर एक बार फिर से ये स्टॉक जा चुका है। मेरी बाइंग 209 की है, तो अब मैं क्या एवरेज करूं या बने रहूं अपने पोजीशन पर? यहाँ पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप एवरेजिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं। हालांकि सपोर्ट जोन जो है स्टॉक का 130 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, तो आगे चल के शायद वो लेवल टेस्ट भी हो सकता है। पर यहाँ से एक चीज क्लियर है कि ज्यादा डाउनसाइड पोजिशनली या इन्वेस्टमेंट के तौर से नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं 130 का एक सपोर्ट जोन है, और रिकवरी में लॉन्ग टर्म का स्टोरी तो अलग ही रहेगा। टेक्निकली फिलहाल 200 से 210 ये दो टारगेट एरिया बनता हुआ दिख रहा है, तो बने रहने की सलाह है। एवरेज करना है तो 130 140 यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, फेयर पॉइंट। यहाँ पर एवरेज करने की सलाह आपको दी जा रही है। नेक्स्ट हम लेते हैं सवाल। हमारे पास और सवाल आ रहे हैं आईटी स्पेस से। सत्या और भूषण आरेकर दोनों आईटी स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, एचसीएल टेक और विप्रो, इन दोनों पर अभी आपका क्या नज़रिया रहेगा? लार्ज कैप आईटी स्पेस के स्टॉक्स हैं, कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट के आसार? जी, तो मेरे हिसाब से अप्रैल मंथ में रिजल्ट नतीजों का महीना है, और मोस्टली आईटी से ही ये स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं एक सोच है कि आईटी सेक्टर जो काफी पिटा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने की खोज में है। एक हल्की सी ट्रेडिंग की रिकवरी रैली आपको आने वाले दिनों में दिख सकती है। तो एचसीएल टेक की अगर आप बात करें तो एचसीएल टेक में जो रिकवरी वाली रैली है 1670 या 1700 यहाँ से यहाँ तक आपको ये दिखा सकता है। हालांकि पोजिशनली जो लॉन्गर टर्म सपोर्ट है वो 1450 है। तो मोर ऑफ अ ट्रेडिंग वाला पुल बैक है जो 1750 1700 तक, 1650 से 1700 तक दिख सकता है। तो कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। पर विप्रो कंपेयर टू एचसीएल टेक पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्गर नेम है। यहाँ पे आप 300 310 ये ट्रेडिंग के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईटी एक ट्रेडिंग पुल बैक है। लंबी तेजी की कोई मैं उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लेते हैं सवाल। हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जाने से पहले खास तौर पर अक्षय पूछना चाहूँगी, आपके पसंदीदा कोई ऐसा स्टॉक जो कि आप मानते हैं कि अब नए फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि आने वाला है उसके लिए ध्यान में रखा जा सकता है? जी, तो जैसे कोटक बैंक है, ये एक स्टॉक है जिससे मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसे कुछ ज़्यादा इसको डेंट मार पाएगा। क्योंकि अगर आप इसका जर्नी देखें तो एक 4-5 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने 1950 में ब्रेकआउट दिया है। तो बिल्कुल मार्केट कहीं भी जाए, प्राइस चार्ट्स बता रहा है कि ये स्टॉक 2400 2500 के
पार करने की तैयारी कर रहा है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, जिसका टाइम होराइजन 1.5 से 2 साल का होगा। तो कोटक बैंक सबसे बढ़िया पिक रहेगा, आपको इसमें निवेश करना करना जरूरी है। कोटक महिंद्रा बैंक का अगले 1 से 2 साल के लिए एक बढ़िया पिक और न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए टॉप पिक यहाँ पर अक्षय की तरफ से। शुक्रिया अक्षय, बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम क्वेरीज को पेशेंटली आंसर करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन डेली कॉल्स एंड होप टू सी यू वेरी सून येट अगेन अनदर एपिसोड एज वेल. Let's now get into the second segment. Now, viewers of our daily calls, we'll now be joined by another top guest. We have Ruchit Jain now joining in, Vice President and Head of Equity Technical Research Wealth Management at Motilal Oswal Financial Services. Ruchit, warm welcome. Good to have you with us. Tell us, at 170 point of an uptick on the Nifty, 23,077, what is the next thing that you foresee for the markets? Hi, very good afternoon, Sakshi. Well, Sakshi, last 3 or 4 trading sessions, we have seen that the broader markets have recovered well along with the benchmark index. The main reason, as we know, since the month of October, two things, which had led to this sharp correction in market. One was the dollar index, which had rallied from 100 to 110, and second was FIS selling. So in last few trading sessions, dollar index has corrected from that 110 mark to 100 and around 103 now. And FIs finally have started covering some of the short positions. Their index futures long short ratio, which was around 13 to 15%, have now improved to 27% as on yesterday. So I think both these factors, short covering by FIs as well as the fall in the dollar index, I think will support the market, and hence we expect some more up move to continue in the near term. Any kind of declines towards 22,800, 22,900, I think should be no good support points for now. And on the higher side, once this 23,100 is surpassed, we can expect levels around 23,300. Okay, fair point. So that's as far as the markets are concerned. We have a lot of questions, Ruchit. So we'll get to some questions and then come back to your, select opportunities that you have to share with all our viewers today. We have this question coming in from Satyan. He says, please let me know, is it good to add Dodla Dairy or Heritage Foods for the next 12 to 18 months at the current price or on dips also? So that's the space that's, in fact, I've heard Heritage Foods after a long haul. It was back in June when the elections came in and the stock really went up sharply. Everybody was having a FOMO, wanted to own Heritage Foods. And after that, it's been like quiet and out of sight quite a bit. Dodla Dairy and Heritage Foods, what looks good? So Heritage Foods as of now doesn't have much positive chart structure, so I would not recommend to avoid that as of now. Yes, Dodla Dairy has a good support base on the weekly charts. If you look at last 5 or 6 weeks, the stock has consolidated around its support of 960, 970, and the support base has been formed over there. So I think that remains very strong base for the stock. Until that is intact, you can go long on Dodla Dairies. But this swing low of 970 or 960, I think, should be kept as a stop loss on your existing or any kind of fresh long positions if you create here. Okay, fair point. I hope this has helped you out in understanding what should you be doing with these stocks. Next, we have a caller with us. I think we have Rupesh Agarwal joining in on the phone line. नमस्कार रुपेश जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं महाराष्ट्र परभनी से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास JSW इनका है @274। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका कि शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म का भी जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, JSW इंफ्रा 274 पर खरीदा हुआ है, 9000 शेयर्स हैं इनके पास। शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं रुचित आपसे, क्या करें अभी? फिलहाल होल्ड करिए आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट के साथ साथ एक अच्छा पुलबैक में हुआ है स्टॉक में। इनफैक्ट कल और आज 2 दिनों में जो इनके 200 दिन के मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है वो भी सरपास किया है। 303 के आसपास ट्रेडिंग के हिसाब से नेक्स्ट हर्डल है स्टॉक के लिए। सो करंट लेवल्स पे आप होल्ड कर सकते हैं। 300 305 की रेंज में आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सवाल आया है मिस्टर अरुण सिसोदिया का। ये पूछना चाह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजीज और कुछ लेवल्स जो आप सजेस्ट कर पाएँ रुचित, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों। सो इमीडिएटली सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,850 से 22,900 की रेंज में नेक्स्ट वीक के लिए।
और हम एक छोटे से हर्डल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं 23,100, जो रिसेंट करेक्शन का 61.8% रिट्रेसमेंट है। अगर हम फिलहाल तो ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, तो ये 23,100 के ऊपर अगर आज या कल वीकली क्लोजिंग हम देते हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस 23,400 के आसपास है। तो आप 23,350, 23,400 ये रेंज नो एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। सो ब्रॉडली ये रेंज रहेगी। कोई भी डिप अगर आता है तो 850 20 टू 850 900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी इंडेक्स देखें तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली बैंकिंग स्पेस से रहा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये ऐसा स्पेस रहा है जो इस अप मूव में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। सो बैंक निफ्टी में भी टेक्निकली एक डबल बॉटम जैसा रिसेंट स्विंग लो पे बॉटम आउट हो चुका है और डिप्स पे 49,750 49,700 ये एक सपोर्ट रेंज है इंडेक्स के लिए। और जो स्विंग हाई आने वाले हफ्ते में अगर टेस्ट होता है तो 50,650 के आसपास लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फेयर पॉइंट। आई होप यहाँ पर भी आपको राय मिल गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल आया हुआ है और ये सवाल है मिस्टर तेजपाल भाटिया का। ये पूछना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू दो स्टॉक्स पर इनके पास ड्रीम फोक्स इन्होंने स्टॉक एक चुना है और दूसरा है ग्राइंडवेल नॉर्टन। अगर हम ड्रीम फोक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए, आई थिंक 2-3 साल हुए होंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो स्टॉक ने कुछ बहुत उम्दा परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 2023 ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक। 2023 में अगस्त में ये 776 पर गया था स्टॉक और उसके बाद से आपने स्टॉक को नीचे आते हुए ही देखा है। अब देखें आप पिछले एक साल में 50% तो कट ऑलरेडी हो चुका, 45% इन द लास्ट 2 years ऑल्सो। तो ये तब से ना एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक ऐसा एक यूनिक तरीके का प्रोपोजिशन था इनका, जो लाउंज एक्सेस होते हैं एयरपोर्ट्स पर में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने चुना है ग्राइंडवेल नॉर्टन का चुना है। इसके शेयर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1638 का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में यहाँ पर भी 31% के हिसाब से गिरावट हमने देखी है। लेकिन ये स्टॉक आई थिंक अगर हम देखें 2021 से लगातार अप ट्रेंड में था और इसका पीक हमने देखा जून 2024 में, वहाँ से एक बार फिर से डिक्लाइन आया है। दोनों स्टॉक्स को देखकर बताइए रुचित क्या करना चाहिए। ड्रीम फोक्स तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले 6 महीने में ही ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। उसके पहले का भी आप थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखें, जब मार्केट अच्छा कर रहा था तभी भी ये स्टॉक में प्राइस वेज डिप आ रहा था। तो आई थिंक यहाँ पे इतनी कोई स्ट्रेंथ फिलहाल तो नहीं है। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसे मार्केट के साथ साथ पुल बैक मूव वगैरह आते हैं तो पुल बैक मूव पे ये स्टॉक में से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। ग्राइंडवेल नॉर्टन में प्राइस वेज करेक्शन आया है बट ये लेवल्स ऐसे नहीं है कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक 1850 1870 ये हडल रहेगा स्टॉक में अपमूव में। वहां पे आता है तो एक बार फिर से वहां पे रिव्यू करेगा, क्योंकि जब अपमूव्स आएंगे तो वॉल्यूम्स देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेदर वॉल्यूम्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहते हैं कि नहीं। सो फिलहाल ग्राइंडवेल नॉटल को होल्ड के लिए ड्रीम फोर्स में से जल्द या कोई भी छोटे मोटे पुलबैक मूव्स में निकलने को देखे और ग्राइंडवेल नॉटन को 1850 से 1870 की रेंज में आता है वहां पे रिव्यू करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, तो एक एक करके कुछ ये लेवल्स देते हैं। अंकुर का सवाल है, कुड यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन BLSE सर्विसेज एंड एलाइड ब्लेंडर्स इन एट द करंट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो BLSE तो फिलहाल 156 के लेवल पर अभी चल रहा है, फ्लैटिश विद अ पॉजिटिव बायस है। ये कंपनी जो है वीज़ा सर्विसेज में इंटरनेशनल जब भी वेकेशंस लेनी होती है आप कहीं ना कहीं इसका वीज़ा प्रोसेसेस में इनका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इनका एलाइड ब्लेंडर्स के ऊपर सवाल है। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सो आई थिंक BLS में तो इतना कुछ खास व्यू नहीं है, क्योंकि ये रिसेंट लिस्टेड ही है, ज्यादा टाइम नहीं जी। हुआ है उसको और तो इतना डेटा नहीं है मेरे पास इसमें कुछ भी आपको रेकमेंड करने के लिए। सो आई वुड रेकमेंड कि एक बार आप फंडामेंटल व्यू ले लीजिए इसके ऊपर। अलाइड ब्लेंडर्स में भी अभी ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है कि स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट तेजी आपको मीडियम टर्म में नजर आएंगी। ऐसे कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन इतने पॉजिटिव नहीं है, तो मैं दोनों ही स्टॉक्स को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दूंगा। Avoid both these stocks, that's the view coming in.
नेक्स्ट गुल का सवाल है हमारे पास, जो आईसीआईसीआई बैंक को खरीदना चाहती हैं 6 महीने से 1 साल तक के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए लेवल्स पूछ रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के साथ, लेकिन अब क्या ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब आईसीआईसीआई बैंक को खरीदना चाहिए? 1314 का करंट लेवल। रुचित, आई थिंक यस, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जैसे हमने शो की शुरुआत में भी कहा कि प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा स्पेस रहा है कि जो रीसेंट करेक्शन में पिछले 1-1.5 महीने में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक्स ने बताया। तो जनरली जब करेक्टिव फेज में जो स्टॉक नहीं गिरता है वो तेजी के समय पे एक अच्छा मोमेंटम नो वहाँ पे देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, दोनों ही स्टॉक्स आई थिंक ये ऐसे दो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहे कि जहाँ पे स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। डाउनसाइड लिमिटेड है, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। इनकेस कोई डिप आता है 1280 जो अभी सपोर्ट बनेगा, कोई डिप पे तो वहां पे आप और पोजीशंस ऐड करके ऐसी रणनीति करके आप 6 मंथ्स में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। okay, let's take some other questions too. We have this question coming in from Bharat Satyam in Kerala. He says, I want to know if there are any value picks in the hospitality and the tourism space. What would your top pick be? I want to invest for about 5 years, and can I invest at the current levels also here? An interesting theme. Already this theme has started to catch on to momentum because of course summer vacations are going to be upon us very soon. People have started to book their vacations already, and this space is again getting back into momentum with the increased travel back home, internationally as well. What are the opportunities that you see in the hospitality and tourism sector? So I think one can look at Indian hotels over here. No, obviously the stock has already given good returns over past few years, but still I think the stock has good scope of going higher from current levels also. Whatever dips we are seeing along with the bear market we've seen recently, we've not seen any high volume based selling. And on dips, we are clearly witnessing buying interest in the stock. So Indian hotels would be one stock which you can expect good momentum. And second would be Indigo. I would say Indigo is another name where we have seen that consistently the stock has made good returns for investors as well as for medium term traders. So I think Indigo and Indian hotels, these two are names where the downside seems to be very limited from here on. If you want to capitalize on this opportunity of this entire theme, then both the stocks can be bought for a portfolio. Okay, we'll take last couple of questions. Kalyan from Bangalore says, can I buy Canara Bank for 6 months at the current levels? PSU banks also, slight recovery can be seen off late. Would you bet on Canara Bank at the current levels, 86? Within the PSU banking space, I would bet more on the large cap, that is the larger name, that is SBI, because we have seen that whenever the price of moves come, the leadership will not come from the mid or the small size bank, but leadership will come from large stocks such as SBI. And once that trend is confirmed, uptrend is confirmed in the SBI, then we would see that follow-up move coming in from Canara Bank and other smaller names. So I think SBI would be better or preferred over Canara Bank. So you can go long on SBI if you want to take part in the PSU banking team. Okay, got that. Next we have a caller with us, Kalpesh Patel, our regular viewer is with us. He's from Mumbai and he usually likes to short his positions in the market and make money. Let's hear from him. Has his thought process changed in the last 3 days of gains? Kalpesh ji, namaskar. कैसे हैं आप? इस तेजी में भी क्या आप शॉर्ट करके चलने की सोच रहे हैं? क्योंकि अब देखिए 2393 पर आ चुके हैं हम, यानी कि 23,100 का लेवल कभी भी आ सकता है। तो अब पॉजिटिव होंगे या अभी भी मार्केट में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? मैं शॉर्ट सेल मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी शॉर्ट सेल किया हुआ है 2050 में। ठीक है, 1700 1600 तक आ सकता है। और नंबर 2, ये सोना शॉर्ट सेलर को चैन से सोने नहीं दे रहा है, तो क्या मैं कब शॉर्ट सेल करूं? क्या ये यहाँ से 81,000 तक आ सकता है? और कौन से 90,000 के शॉर्ट सेल करूं या 91 के शॉर्ट सेल कब सेल करूं? गोल्ड के ऊपर पूछ रहे हैं। दोनों पे, गोदरेज प्रॉपर्टी और सोने पे, दोनों शॉर्ट सेल है। सोने के ऊपर भी ठीक है। तो पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, शॉर्ट सेल किया है 2050 पर, पूछना चाहते हैं कि 1800-1700 तक के लेवल्स आ सकते हैं या नहीं। और दूसरा, सोना इनको चैन से जीने नहीं दे रहा है और चैन की नींद नहीं दे रहा है क्योंकि सोना लगातार भाग रहा है। यहाँ पर भी शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, क्या करें? ये गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। कुछ इतनी बड़ी गिरावट तो ये स्टॉक में इमीडिएटली एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर पिछले 3 हफ्ते में देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ही रहा है कि जिसमें 2100
2120 2100 यही एक हडल रहा है जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है. सो अगर ये 2140 का लेवल अगर सरपास कर देता है कैश सेगमेंट में, तो फिर एक पुलबैक मूव इनफैक्ट ये स्टॉक में बन सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहाँ पे हमने कोई सिग्निफिकेंट तेजी अब तक देखी नहीं है. तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी एग्जिट कोई नई शॉर्ट्स बनाने के लिए देख रहे हैं तो अवॉइड करें, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो 2140 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखे, 2140 के लेवल अगर सरपास होते हैं तो शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट कर दीजिएगा. और जहां तक सोने का सवाल है, नो डेफिनेटली आई थिंक मैं इतना क्लोजली एकदम चार्ट्स पे ट्रैक नहीं करता, बट जहां तक ट्रेंड की बात है ये क्लियर है कि सोने का ट्रेंड ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहा है बुलियंस का इस साल में, पिछले कुछ महीनों में. सो आई थिंक वहां पे भी ट्रेंड के साथ में रहे तो आई थिंक अच्छे से सो भी पाएंगे. सो बेटर है कि ट्रेंड के साथ में रहे, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं रहे. बट नो अगेन इस पे ज्यादा डिटेल्ड आप कोई कमोडिटीज के सेगमेंट में जो कमोडिटीज क्लोजली ट्रैक करते हैं उनसे भी एक बार राय ले ले आपकी गोल्ड की पोजीशंस पे. ओके, गॉट दैट. चलिए, इसी के साथ इस शो को समेटने का समय आ चुका है. रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए इस खास शो पर. अब देखिए, नियरली 200 पॉइंट्स अप हैं हम निफ्टी में. आपको लगता है कि जल्द ही जो हम ऑल टाइम हाई लेवल सेलिब्रेट करते थे आ सकते हैं हम बाजार में? ये ऑल टाइम हाईस तो थोड़ा समय डेफिनेटली लगेगा, बट लेकिन हाँ, अगर मार्केट्स बॉटम आउट भी हो जाता है, 22,000 के रिसेंट लोज बना है उस पे, तो अपॉर्चुनिटीज काफी बनेगी नो इस तेजी में. सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक तरफा रैली रहेगी, बट यस मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छे मौके हैं अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो. Okay, got that. Thank you so much, Ruchit, for being with us on the show and Thank you, helping sir. all our viewers with all the insights that you've shared. With that, viewers, we wrap up today's Daily Calls edition on a very high note, 23,102, the Nifty at the highest point of the day, and the markets continuing for the third day in a row. I hope this continues to catch on momentum and build on from here as well. We'll continue to watch what happens in the last 2.5 hours of trade. Stay tuned with us on Market Today. A lot of interesting conversations coming on as far as top market investors and ace investors are going to be guiding you through. Stay tuned with us on Business Today. A freshly released video by Noida International Airport showcases its progress.